Okay, we are live once again, and let's hope that I'm audible this time. Can you guys give me a quick response if I'm audible, if any one of you is on the stream? Can you guys hear me? Am I audible? Am I visible? A quick confirmation would be highly appreciated. Guys, am I audible? Audible to you? Am I audible? Guys, am I audible? Okay, I think I am audible because I checked it on my device. So I'll proceed with the class. क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? क्या मेरा वीडियो आप लोगों को दिख रहा है? ऑलराइट, वंडरफुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। चलो, लेट्स बिगिन। सो पीपल हु आर नॉट अवेयर, ऑडियो ग्लिच हो गया था पिछली वाली स्ट्रीम में, सो दिस इज अ न्यू स्ट्रीम एंड टुडेज क्लास इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू लीगल रीजनिंग. I'll quickly present the presentation with you all on the screen. Let's begin. I'm hoping rest of the other people would also join in due course of time. Till then, I was telling you that what are we going to do in today's session? आज के session में हम क्या क्या करने वाले हैं? What are we going to cover? This is the agenda for the day. We'll be understanding what exactly is legal reasoning as a subject. इसमें क्या करना रहता है? Do we need to have a prior understanding of law? Do we need to study all amendments? Do we need to study the law actually in detail, or just using reasoning can be used in order to come to the right answer? So we'll understand what exactly is the subject all about and क्यों पूछा जाता है ये CLAT में. Then secondly, we'll talk about when to do legal reasoning. यानी कि आपको कब अटेम्प्ट करनी चाहिए लीगल रीजनिंग इन अ पर्टिकुलर मॉक टेस्ट और इन द एक्चुअल एग्जाम. क्या आपको स्टार्टिंग में करनी चाहिए, क्या आपको एक दो सेक्शंस कवर करने के बाद करनी चाहिए, या फिर आपको लास्ट में लीगल रीजनिंग करनी चाहिए. विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट. Thirdly, we'll talk about how much time should you give to legal reasoning as a subject, and also while attempting a mock test or while attempting a actual exam. I hope I'm audible and visible still as of now to everyone. Can I have a very quick yes in the chat box if I'm audible and visible? Yes or no? I hope I'm still audible. Let me just quickly check. Okay, I think I'm audible. Chalo, we'll proceed. The fourth thing which we are going to do today is what are the types of questions which are asked in CLAT exams. So we'll look at CLAT किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, क्या सब्जेक्ट एरियाज ऑफ लॉ आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एंड कैसे उनको आंसर करना है. So we'll talk a little bit about those things. Then lastly, we'll talk about how to become good at legal reasoning, how to become a pro at legal reasoning, and how to solve legal reasoning questions with ease. What are some tips and tricks and insights which you guys need to know in order to be good at the legal reasoning section? So these are the 5 things which we are going to cover in today's class. I am really excited to start with a new beginning, and for the 2026 batch, this class is going to be relevant for everyone who is preparing for CLAT 2026, ALET 2026, or the other law entrance exams in the year 2026, and also for people who attempted CLAT this year in 2025 and unfortunately did not get the desired result for whatever reasons and are planning to reappear. So this is going to be super beneficial, and I hope all of you are ready to begin this journey with me. My name is Govind Singh. I am a faculty at Career Launcher. I recently graduated from Nalsar, Hyderabad, and I'm delighted to begin this class with you. Let's talk about what is legal reasoning. What exactly is legal reasoning from the perspective of CLAT 2026 and how to approach this section. Firstly, हमारे मन में सबसे पहले ख्याल ये आता है कि लीगल रीजनिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग टू बिकम अ लॉयर आफ्टर वी जॉइन अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ द लॉ स्कूल्स. So why are we required to know the law before even starting to study the law? Because we have not been taught any of legal reasoning or law in our schools, be it commerce stream, be it science stream, be it the art stream, be it the humanities stream, or be it international, whatever program you have attended. Most of you have not studied any
amount of law in your respective school education. So why are we put through this exercise of understanding various laws and how various laws works in different fact scenarios is a very pertinent question. What they're trying to do here by introducing the legal reasoning section, by having this section in place, is understanding whether you have the aptitude to become a good lawyer, to become a good legal professional or not. What exactly is aptitude? क्या आप में वो capability, क्या आप में वो क्षमता, क्या आप में वो critical thinking skills, क्या आप में वो analytical thinking skills, क्या आप में on the spot thinking skills, क्या आप में ethical thinking skills हैं या नहीं है? That is what they are trying to test using the legal reasoning section. So अब द पर्टिनेंट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या हमें पहले से लॉ आना चाहिए इन ऑर्डर टू बी गुड एट द लीगल रीजनिंग सेक्शन, इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स? द आंसर टू दैट इज बोथ अ yes and a no. Now, how can an answer to a question be both yes and no? So I'm saying, quick question, sorry to bother you. According to UNCL, what would be a safe score for elite? Somewhere around 105 to 107 is my prediction. Can be plus minus 2 3 marks, but yeah, that is what I believe. Okay, chalo. Let's talk about the question as to should you have prior legal knowledge, prior understanding of the laws in order to be good at the legal reasoning section? The answer to that is both yes and no. Why both yes and no? No, because the CLAT consortium website explicitly states that you do not need a lot of knowledge of law. You would not require any prior knowledge of law to attempt questions in this section. And they also go on to say that you will benefit from general awareness of legal issues going around you, because that would help you better apply the principles of law to given fact scenarios. अब ये principles of law क्या होते हैं and ये fact scenarios क्या होते हैं? Important question to understand, right? Now, the way questions are structured in the CLAT exam and the ALET exam is they give you a legal principle. Principle, essentially they give you a law, an actual law. Now it could be different from Indian laws or it could be similar to Indian laws. That is not the question here, but they just give you a law, a principle. Okay. For example, the principle or the law is anyone who takes something from the possession of someone without their knowledge commits offense of theft. ठीक है, तो यहां हमने क्या बोला? Anyone who takes something from the possession of someone else without their knowledge commits an offense of theft. Theft क्या होता है? चोरी, है ना? तो अगर कोई किसी के पोजेशन से कोई उसका सामान बिना उसकी जानकारी के ले जाता है, बिना उसकी परमिशन के ले जाता है, तो हम बोलते हैं कि उसने चोरी करी. ठीक, ये हो गया हमारा लीगल प्रिंसिपल. तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में. अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वुड बी इन्वॉल्विंग अ फैक्ट सिनेरियो, यानी कि एक कहानी बताई जाएगी आपको. व्हाट वुड बी दिस फैक्ट सिनेरियो? दिस कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ गाय कॉल्ड सुरेश. ओके, now Suresh goes to the house of Ramesh as a guest. Suresh and Ramesh are friends. Suresh goes to the house of Ramesh as a friend. जब तक Ramesh goes to his kitchen to get something for Suresh to eat, Suresh notices that Ramesh की एक expensive watch is kept on the table. Suresh very cunningly keeps that watch in his own pocket and hides it while Ramesh is in the kitchen. And then when they are done having dinner, Suresh leaves Ramesh ka ghar and brings that watch with him to sell it or to wear it, whatever. ठीक है? So अब आपसे पूछा जाएगा, has Suresh committed the offense of theft? And you would have to decide on the basis of this fact scenario कि क्या सुरेश ने offense commit किया है या नहीं किया है. Simple as that. अब यहाँ पे हमें फैक्ट सिनेरियो देख के पता चल रहा है कि सुरेश हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. तो जो भी ऑप्शन इस बारे में बात कर रहा होगा, इससे क्लोजली रिलेटेड होगा, विल चूज दैट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन द लीगल रीजनिंग सेक्शन. अब इससे क्या टेस्ट होता है? इससे टेस्ट ये होता है कि हाउ वेल कैन यू अप्लाई अ पर्टिकुलर लीगल प्रिंसिपल, अ पर्टिकुलर लॉ टू अ पर्टिकुलर फैक्ट सिनेरियो. क्योंकि एक लॉयर को क्या करना होता है? एक लॉयर को एक्चुअली यही करना होता है
उसको लॉ पता होता है और उसको नए नए फैक्ट सिनेरियोज मिलते हैं, उसको नए नए केस सिनेरियोज मिलते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं तो थेफ्ट में ज़रूरी नहीं है कि केस इतना सिंपल होगा. इट कुड बी कॉम्प्लिकेटेड. इट कुड बी दैट Ramesh has given the watch to Suresh to keep it safe, and then Suresh goes on and sells that watch to someone. So would that be valid? Would that be legal? There could be n number of possibilities. What we are concerned here is that how well can we interpret a legal principle and how well can we apply that principle to the facts. ठीक है. अब ये तो हो बात हो गई knowing the law की. अब why did I say that knowing the law is beneficial in solving such questions? Because if you know the law, you understand how law operates, you understand the basics of criminal law, you understand the basics of constitutional law, you understand the basics of contract law, you understand the basics of tort law. तो दैट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल मच फास्टर, क्योंकि प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं? मोस्टली इन्हीं 4 सब्जेक्ट एरियाज से आते हैं. उसके अलावा मिसलेनियस भी कुछ सब्जेक्ट एरियाज होते हैं, एंड उसके अलावा कुछ कुछ लीगल जीके या कंटेम्प्रेरी लीगल जीके से भी योर प्रिंसिपल्स कैन बी फ्रेम्ड. सो अगर आपको पहले से लीगल जीके पता है या अगर आपको पहले से ये 4 सब्जेक्ट्स पता है, तो यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रिंसिपल्स, है ना. That is the reason why it is beneficial in having a prior understanding of law. A little bit of prior understanding. बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको, एकदम लॉयर ही नहीं बन जाना है कि आप कल जाओ और बेयर एक्ट खरीद के, बेयर एक्ट एज इन द एक्चुअल बुक विच कंटेन्स द लॉज, वो खरीद के ले आओ एंड उसको पढ़ने लगो कि कौन से सेक्शन में कौन से क्राइम के बारे में कौन सी पनिशमेंट दिए. नो, वी डोंट हैव टू गो टू दैट एक्सटेंट. वी जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स of these 4 basic subjects, a few miscellaneous topics, and of course, what is the legal GK. Legal GK में भी there are 2 bifurcations. One is your static legal GK and one is your current legal GK. Now you might ask, what is static legal GK? Static legal GK is essentially all your facts related to your constitution and its development. And not just constitution, but all your development related to laws. For example, there are landmark judgments which direct our courts with respect to how to decide a particular case. You might have heard of judgments like K.S. Puttaswamy versus Union of India, which was the right to privacy judgment. You may have heard about Keshwanand Bharti judgment, right? So these are some landmark judgments which have been given by Supreme Court judges, and these judgments really have a huge impact on how law is shaped in our country. So इस वजह से it is important to understand the static GK कि what does the constitution talk about, what are the basic principles of the constitution, how did the constitution come into being, किस दिन constitution sign हुई, क्या क्या fundamental rights होते हैं, क्या क्या fundamental duties होती हैं, ये कौन से articles में mentioned है. ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी स्टैटिक लीगल जीके में. अब करंट लीगल जीके में क्या क्या आ जाता है? करंट लीगल जीके में आ जाते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ. सो दीज कुड बी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, या फिर अगर कोई न्यू लॉज हैव बीन इनैक्टेड और हैव कम इनटू फोर्स. फॉर एग्जांपल, इन द ईयर 2024 हम सबको पता है कि आईपीसी वाज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता. उसके अलावा और भी 2 नए लेजिस्लेशन हम लेके आए, बीएनएसएस एंड बीएसए. सो दिस वाज अ करंट लीगल जीके डेवलपमेंट. अब इसके अलावा जजमेंट्स की अगर आप बात करो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए इस बार. सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट पे जजमेंट आया, वक्फ बोर्ड पे जजमेंट आया, उसके अलावा सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट पे जजमेंट आया, बहुत सारे इस तरीके के जजमेंट्स आए. मिनरल्स वाला एक जजमेंट आया, टैक्सेशन ऑन मिनरल्स, टैक्सेशन ऑन अल्कोहल वाला एक मेजर जजमेंट आया. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट become the part of a current legal GK. ठीक है, recent judgments and recent laws. That is how the legal reasoning section is approached. ALET safe score category wise cutoff needed. We have a video on the channel which talks about that, but ALET का safe score मैं बता चुका. It's going to be somewhere around 105 to 107 for the general category, and for the SC category you can take off 5-7 more marks. For the ST category, take off more 3, 4, 5 more marks. That would be my prediction. It could be accurate, it could be a little bit off by 2-3 marks. That depends on how students have performed, but yes, that is my take. ठीक है, बाकी we'll get to know it in a couple of days in any way. ठीक है,
Chalo, let's move on to the next slide, which is what does the consortium website say about the legal reasoning? हम already discuss कर चुके हैं that you would be expected to read passages of around 450 words each, which may relate to fact situations or scenarios involving legal matters, public policy questions, or moral philosophical inquiries. You are not required any prior knowledge of law to attempt the questions in this section. You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principles or propositions to the given fact scenarios, right? Each passage will be followed by a series of questions that would require you to identify and infer the rules and principles set out in the passage, apply such rules and principles to various fact situations, and understand how changes to the rules and principles may alter their application to various fact situations. ठीक है? तो मैं आपको समझा चुका हूँ what essentially this is all about. So we can proceed to the next point, which is when to attempt the legal reasoning section. Now, although this would make more sense to talk about this in the later few months, when you have a good grip on all of the sections, at least have a basic understanding of how well you are performing in each of the sections. The sections like English, the sections like logical reasoning, sections like quantitative techniques, and sections like GK. When you identify where are your strengths and weaknesses with respect to these particular sections, you would be in a better position to decide कि आपको legal reasoning पहले करनी है या बाद में करनी है. The thumb rule is we always start with the section जिसमें we are more comfortable. What are our strengths? For most students, they start with GK because GK is direct, and GK में either you know the answer or you don't know the answer. Then a lot of students usually attempt English or the logical reasoning section because they are more comfortable with these two sections, and the questions, some of the questions are easy and direct. And then mostly students either proceed with the legal section or the quantitative techniques wala section. We'll talk a little bit about this later when we are into in-depth understanding of legal reasoning as a subject and all the other subjects का भी हमारे पास अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होगा तो देन वील बी एबल टू बेटर डिसाइड कि आपको लीगल रीजनिंग स्टार्टिंग में करनी चाहिए या एंड में करनी चाहिए या मिड में करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. मैंने ये स्लाइड यहाँ पे इसलिए डाली थी जस्ट टू टेल यू दैट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आप लीगल रीजनिंग स्टार्टिंग में कर लोगे तो आप बेटर करोगे, या फिर आप एंड में करोगे तो बेटर करोगे, या बीच में करोगे तो बेटर करोगे. इट मैटर्स. It depends on your strength and weakness. It depends on how the paper is structured. अगर legal reasoning लेंथी आई है तो मैं ऑब्वियसली उससे स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं उसको थोड़ा सा बीच में रखूंगा when I have scored at least 30, 40, 50 marks in questions, and then I have some confidence and then I'll approach the section. अगर टफ आई है तो भी मैं उसको स्टार्टिंग में नहीं करूंगा. So that is something which we play around based on how the paper is and based on how well we are prepared for each section. ठीक है? So that is how it works. Now, moving on to the next part, which is how much time to give to the legal reasoning section. अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लीगल रीजनिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं. 32 क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं स्प्रेड अक्रॉस 5 पैसेजेस. 2025 का जो पेपर था उसमें ये ट्रेंड चेंज हुआ एंड दे इंक्लूडेड 6 पैसेजेस. वी लुक एट कि वो 6 पैसेजेस कौन से रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एरियाज से आए हैं वो भी हम देखेंगे. बट ऑल इन ऑल देयर वर 32 क्वेश्चंस. ठीक है, तो 32 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास कितना टाइम हमें एलोकेट करना चाहिए. हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चंस हैं. वी हैव 120 मिनट्स टू आंसर देम व्हिच आर 2 आवर्स, है ना. तो कैसे वी विल स्ट्रक्चर आवर टाइम. नाउ आइडियली 32 क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग सेक्शन, इफ द सेक्शन इज नॉट वेरी लेंथी, should ideally take you 1 minute per question, not more than that. So ideally आपको 32 questions को कर लेना चाहिए in less than 30 minutes in any case, because कुछ questions would be direct and shorter, directly factual in nature. So उसमें आपको definitely 1 minute से कम लगेगा. हो सकता है कुछ questions में 1 minute से ज़्यादा लग जाए. It depends on how lengthy the question is, how complicated the question is, how complex the legal principles and fact scenarios are. उस पर depend करता है. But ideally a good ideal time limit to attempt the legal section is less than 30 minutes. ठीक है, मिनिमम आपको 24-25 minutes तो लग ही जाएंगे to answer these questions, but try to put them under 30 minutes. In any case scenario आपको legal section पे 35 minutes से ज़्यादा devote नहीं करने, because that would compromise your other sections अगर आप एक ही section पे बहुत ज़्यादा time spend कर दोगे. ठीक है? Alright. Now let's talk about what are the types of questions which are asked in legal reasoning.
तो लीगल रीजनिंग में प्राइमरली 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हम स्टडी करेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. फर्स्ट वुड बी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देन इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन इट वुड बी क्रिमिनल लॉ, एंड देन इट वुड बी लॉ ऑफ टॉर्ट्स. थोड़ा सा मैं आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एसेंशियली गवर्न्स योर अग्रीमेंट्स जो भी आप करते हो बिटवीन टू पार्टीज और मल्टीपल पार्टीज, जिसमें टू पार्टीज लेट से अग्री, ए और बी के बीच में अगर अग्रीमेंट हुआ है कि ए वुड गिव हिज फोन टू बी and B would buy that phone for let's say 10,000 rupees. ठीक है. सो ये एक अग्रीमेंट हुआ कि ए बी को अपना फोन बेचेगा, बी उससे खरीदेगा 10,000 रुपीज में. सो दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर. ठीक है. सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ? क्या बी अगर पैसे ना दे ए को, कैन ए गो टू द कोर्ट? यस, ए कैन गो टू द कोर्ट इफ दे हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट. सो अग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिबल आर एसेंशियली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. इंडिया में जो स्टैट्यूट यानी कि जो लॉ इसको गवर्न करता है दैट इज कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ऑफ 1872. विल स्टडी about it in depth when we begin our discussion on the law of contracts. उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, which the name easily suggests कि this is the law which talks about the Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स किस चीज़ की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी क्या होता है, ये सारी चीजें वी डिस्कस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला एस्पेक्ट. ठीक है. देन यू हैव योर क्रिमिनल लॉ विच वुड नाउ बी गवर्न बाय योर बीएनएस. तो क्रिमिनल लॉ हम सबको पता है कि when you commit a crime you are governed by the criminal law and you are punished for that. ठीक है. So crimes like murder, homicide, theft, robbery, ये सारे टाइप के जो crimes हैं these are governed by the criminal law, specifically BNS और भारतीय न्याय संहिता. So we'll study a little bit about that. Then we have the law of torts जो कि codified नहीं है. Codified का मतलब है कि इससे related कोई specific law नहीं है, written law, but it is still enforceable under civil law. एंड ये बात करता है सिविल रॉन्ग्स की. सिविल रॉन्ग्स क्या होते हैं, कैसे कमिट होते हैं, कैसे इन्फोर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. इसमें आपके ऑफेंसेस जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि न्यूसेंस या फिर नेग्लिजेंस या फिर लेट्स से एन एक्सीडेंट. दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस यूजुअली गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ टॉर्ट्स. डेफेमेशन, राइट. चलो, देन कंटेम्प्रेरी लीगल जीके क्या होती है मैंने आपको बता दिया. इंपॉर्टेंट legislations and important judgments. These are the two things which we cover in contemporary legal GK, and we'll keep on studying them either through our GK classes or through our legal classes. Then कुछ miscellaneous topics भी होते हैं. Miscellaneous topics जैसे जो इन चार के अलावा बहुत सारे laws exist करते हैं. There is company law, there is intellectual property rights related law, there is let's say space law, there is environmental law, there is animal law, there is family law, there are laws which govern partnerships. There are so many different types of laws in India. So उन पे भी कभी कभी miscellaneous questions बन जाते हैं. So वो होते हैं हमारे miscellaneous topics and उनको भी हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा. Now, what were the types of questions asked in the CLAT 2025 exam? तो 6 passages which we were discussing were asked and उनके basis पे 32 questions were asked. एंड वो 6 पैसेजेस किन टॉपिक्स पे थे? एक तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे था. इट टॉक्ड अबाउट वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स. द सेकंड पैसेज वाज अराउंड जीआई टैग्स. जीआई टैग्स आर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स. दिस कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अभी डिटेल में नहीं जाते हैं इसकी, बट हाँ. पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट वाज अ पैसेज व्हिच केम फ्रॉम कंटेम्पररी लीगल जीके, क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में ही पास हुआ था इन ऑर्डर टू स्टॉप चीटिंग इन एग्जाम्स, है ना. इसको एंटी चीटिंग लॉ भी बोलते हैं. देन एक पैसेज आया था पॉक्सो पे. पॉक्सो इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. उससे रिलेटेड एक पैसेज आया था एंड 6 क्वेश्चंस आए थे. एक आया था फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पे एंड एक आया था राइट टू प्राइवेसी पे. तो दीज वर द 6 पैसेजेस जिनके बेसिस पे 32 क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड एंड यू हैड टू आंसर देम. लेवल की अगर हम बात करें तो 2025 का लेवल वाज आई वुड से ऑन द इजियर साइड. काफी easy section था. Most of the students who were well prepared attempted more than 29 questions out of 32, and a good score would have been anywhere around 28-29 itself out of 32 marks. So you can understand from this that legal reasoning is a very scoring section if you are well prepared.
So it's very important to study legal reasoning अच्छे से and give it the required effort and time which it deserves and score maximum marks and get a good rank using this particular section. ठीक है? Now, what are some things which you do in the course of next few months in order to become good at legal reasoning? We'll be understanding the nuances of the four key pillars of legal reasoning, which is contract law, tort law, criminal law, and constitutional law. We'll stay updated with the contemporary legal GK and legal awareness through our classes. We'll be reading editorials and opinion pieces related to legal developments. This would happen either through the Hindu analysis sessions, which are also taken by me at 3 p.m. They would start very soon. And of course, by legal reasoning classes as well. Then we would also begin our discussion by solving some previous year question papers. So सबसे पहले 2025 से ही start करेंगे in the next class, and we'll solve that particular paper. We'll solve the questions so that you guys get a better idea as to how you need to prepare and what you need to prepare for. Then, of course, we'll delve into the concepts of principle and facts and how they work and how to apply and how to solve questions. And lastly, of course, practice, practice, and practice. So that would make you perfect and a professional at solving questions of legal reasoning. So that is the plan, that is the agenda which we have. And I'm very excited to get on to this journey with you guys. If you are excited like me, do drop a like on this particular video, do drop a comment with your suggestions, feedbacks, and do subscribe to the channel as well, because this is going to be an interesting journey going forward. Thank you so much for attending today's class. That's all for today. In the next class, if I would be taking it, we would possibly looking at the 2025 question paper, and we will be analyzing how we should have gone about it. That's all for today, guys. I'm your faculty, Govind Singh, and I'm signing off from this particular section. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye-bye.